Hey, so let's discuss what I mentioned on Friday and what my plan was for open. So I had taken positional puts and was expecting 17,400, not by today, because the positional puts I've taken are monthly puts. So I do expect 17,400 to break at least in the coming days. For at open, my plan was basically to just watch and see how 1 hour closes and then decide. One hour did not really do anything, so did not really do anything in the morning. Considering the volume structures also, I did not really like. There were no good volumes in both Bank Nifty and Nifty, so straight away the only trade I took, which I shared, was basically shared on my YouTube channel and other social media channels. Was I think I shared around this timing. Trade was if 17730 breaks, which is this candle low, I will be shorting it, scalp short. Stop loss was this candle high, day high, which was 24 points, and target was VWAP break. So even if you consider this candle, which is around 680, which broke VWAP, and then again it became sideways. So this was a trade which gave almost 50 points with a 25 point stop loss. That is the only trade I took. Did not do anything else today in Bank Nifty or Nifty. Still have positional puts which are in red. Let's see what is my plan for tomorrow. If Nifty opens say above VWAP tomorrow, or comes around, or spot comes around 650 levels, I will look for a short, stop loss day high. So any up move in the morning tomorrow, I'll look for a short with stop loss today is high. That's the plan. Let's see. थैंक यू. देखते हैं फ्राइडे को मैंने क्या बोला था. फ्राइडे को बेसिकली मेरे पास कोई प्लान था नहीं. मैं चाहता था 1 घंटा क्लोज हो, उसके बाद डिसाइड करूं, या कोई अगर वॉल्यूम स्ट्रक्चर आता है तो मैं डिसाइड करूं. अगर आप मेरे वीडियोस फॉलो करते हैं तो आपको पता है मैं किस वॉल्यूम स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा हूं. तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में दोनों में अच्छे वॉल्यूम्स थे नहीं, तो मैंने कुछ किया नहीं सुबह. और एक ट्रेड जो मैंने शेयर किया था सोशल चैनल पे 12:45 के आसपास, वो ट्रेड था कि 17,730 के नीचे शॉर्ट करूँगा मैं, टारगेट रहेगा VWAP ब्रेक. इस ट्रेड ने ऑलमोस्ट 1:2 दिया. वही एक ट्रेड लिया था बस मैंने. और अब मैं क्या करूँगा कल, तो बेसिकली मैं चाहता हूँ मैंने पोजीशनल पुट्स उठाए थे फ्राइडे को, ये मैंने मेंशन किया था वीडियो में, और मंथली पुट्स हैं, तो मैं एटलीस्ट चाहता हूँ 17,400 ब्रेक हो आने वाले दिनों में. और कल का व्यू भी मेरा यही है कि अगर ऊपर की तरफ खुले तो मैं आज का जो हाई है उसको स्टॉप लॉस रख के बेचूंगा. अगर ऊपर की तरफ नहीं खुला तो मैं वेट करूंगा ऊपर आने की और फिर बेचूंगा. पर आज का स्टॉप लॉस हाई रहेगा, और देखते हैं क्या होता है. थैंक यू.